We shall be going live and the webinar will start after 5 to 7 minutes. Dear friends, this is going to be the last webinar of the series, but the recordings are going to be available on YouTube for future references. So just bear with me for a few minutes till we have the attendees coming into the room, because we have slowly getting increasing number of attendees joining the room. So once we have waited for 5 minutes, we start at 8:05, 8:07. Meanwhile, kindly note the announcements that are flashing on the screen so that you can take the benefit of future work in this field. You can join Parkinson Care Trust by filling up the form. Just scan the QR code and you should be able to become a member. It's a free of charge. And Just Look is also offering support for people who are considering deep brain stimulation surgery. It's a probably first time that I've ever come across Just Look offering support for the surgery. And I would recommend that if you are thinking about surgery, you should take the advantage or benefit of this.
We'll wait for 3-4 minutes more and then we will start. We will start in exactly 2 minutes. Asmita, we should be ready to start at 8:06. Okay, we can start. Good evening, everyone. This is the third webinar of our Parkinson Care Trust, third and last webinar of the Parkinson based on the Parkinson disorder. So we move on to the third webinar.
So I'll start with the introduction of Dr. Parish Doshi. So he is a director of neurosurgery and functional neurosurgical program at Just Hospital. He is also director of the restorative and regenerative medicine at Just Hospital. He has several positions. He is the president of the Neuromodulation Society, secretary of the World Society of Stereostatic and Functional Neurosurgery, also the past president of ISSFN, also the board member of INS AASSFN. He is a member of the International Task Force for Psychiatric Disorders. He has more than 60 publications and 550 invited lectures in his credits. He is also recipient of the PhD at Rajasthan University and also the recipient of the several awards in his field of medicine and neuroscience. Welcome, Dr. Doshi. Thank you. Next is Dr. Devashri Thakur. She is a clinical research associate at Jaslok Hospital and Research Center, Mumbai. She has several achievements in her credit. She is a medical professional with a strong background in the patient care, gaining 5 years of experience in hospital settings. She is a currently research associate with Dr. Paresh Doshi. Her work primarily revolves around multiple research projects for disease, assessment and evolution of movement disorder, active involvement in DBS surgery, programming post DBS, and improving patient care. She is a passionate about bridging the gap between medical science and patient well-being. Welcome, Dr. Thakur. Last speaker is Dr. Professor Ray Chaudhary. He is a professor of neurology, movement disorder at King's College Hospital in London. He is a director of the Parkinson Foundation International Center of Excellence at King's College. He is also chairman of the Inter-Engagement Committee and co-chair of Task Force of the Parkinson Wellness Committee of the Movement Disorder Society. He has published more than 350 peer-reviewed papers. So, researcher and director and assistant medical director at King's Hospital. He has published largest number of articles in his field. He has been considered as one of the top researchers in England and has been awarded prestigious UK and national NHS Gold Merit Award in 2021. So I'll invite Dr. Paresh Doshi to say a few words about this webinar. Thank you for the kind introduction of the three speakers today. This is, as I said, the third and the last webinar in the series, and all the webinar recordings will be available to all of us. We are trying to translate. ये हिंदी में भी translate करने की कोशिश कर रहे हैं और translation भी आपको available होगा. तो अगर आप हिंदी में नहीं समझ, इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो चिंता मत कीजिए. आज के जो स्पीकर्स हैं बहुत ही सिलेक्ट करने में बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट किया है इन लोगों को. प्रोफेसर रे चौधरी आज के जो स्पीकर है 15-20 मिनट में अपने साथ जुड़ेंगे. वो इंग्लैंड से जुड़ने वाले हैं. वो अभी अपने एक मीटिंग में व्यस्त है, बट 15-20 मिनट में ही विल बी विथ अस. डॉक्टर देवेश्री इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम और वो काफ़ी टाइम से पार्किंसंस के मरीजों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका पर्सनल अनुभव और उनके जो रिसर्च का पार्ट है वो अपने को सुनने मिलेगा. एंड ऑब्वियसली मेरी तरफ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की है तो कैसे आपकी लाइफ उसके बाद सुधर सकती है. तो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आज के पहले दो वेबिनार में हमने कभी डीबीएस करना चाहिए, डीबीएस का क्या नए टेक्निक्स आए, वो सब के बारे में सुना, लेकिन डीबीएस का आउटकम, ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन उसका आउटकम कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज. सो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड आई इनवाइट डॉक्टर देवश्री ठक्कर टू स्टार्ट हर प्रेजेंटेशन. Thank you so much, sir. First of all, I'm very obliged and privileged to have this platform sharing with you, especially with such international speakers and you holding these webinars for patients as well as their caregivers. So, starting and mentioning the caregiver word, I would actually, my today's topic is on caregiver, how we understand and help caregivers basically. Caregivers are those who support those who need support. Who are caregivers? Caregivers कौन होते हैं? जैसे कि हमने जाना है पार्किंसंस पेशेंट के साथ जो फैमिली मेंबर जुड़े होते हैं, फैमिली मेंबर यानी सिर्फ पेशेंट के स्पाउस नहीं, उनके हस्बैंड या
उनकी वाइफ नहीं बल्कि बाकी के फैमिली मेंबर्स भी जो उनके साथ जुड़े होते हैं, जो उनका देखभाल करते हैं, वो होते हैं केयर गिवर्स। हमें पता है पार्किंसन डिजीज एक ऐसा बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, डिजेनरेटिव प्रोसेस आई वुड से, जहाँ पे पेशेंट का उठना चलना बैठना, यानी कि दिनचर्या की हर वो एक्टिविटी अफेक्ट होती है, और उसी को उनका वो एक्टिविटी में हेल्प करने का काम, वो जिम्मेदारी एक केयर गिवर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सो एज आई सेड, पार्किंसंस डिजीज इज अ कंडीशन जो पेशेंट के मूवमेंट को काफी कठिन बनाती है, एंड केयर गिवर्स वो बैकबोन है उस पेशेंट के केयर की, जहाँ पे वो एक फिजिकल नहीं, यानी फिजिकली नहीं, पर उनके इमोशनल सपोर्ट भी बनते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्किंसंस पेशेंट। केयर गिविंग टास्क कैन बी डिमांडिंग, केयर गिविंग देमसेल्फ, पीपल फॉरगेट कि केयर गिवर्स के काम को डिमांड तो किया जाता है, लेकिन उनके बारे में कभी कोई सोचा नहीं जाता है, यानी कि केयर गिवर्स को भी जो उनके डिमांड्स होते हैं, उनके अटेंशन होते हैं, वो पूरे नहीं की जाती है। तो उसी के बारे में आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ। इस मेरे सेशन से हम ये पता करेंगे केयर गिवर्स को पेशेंट के साथ साथ अपने लाइफ को कैसे वो हेल्दी रखे, या खुद पेशेंट के साथ साथ खुद की वो केयर कैसे ले, इस पे मैं आज बात करूंगी। नेक्स्ट। एक्सेप्टेंस, ये वर्ड ही काफी बड़ी है। एक्सेप्टेंस कि ये पेशेंट को पार्किंसंस हुआ है, ये पेशेंट के लिए ही नहीं बट हर वो फैमिली मेंबर के लिए भी एक बड़ा डायग्नोसिस के रूप में आता है। पेशेंट के साथ साथ इक्वली वही एक्सेप्टेंस पहला केयर गिवर को आएगा, तभी ही पेशेंट की आगे की जो जर्नी है वो आसान होगी। यानी कि पेशेंट के इस एक्सेप्टेंस को हमें समझना है कि अभी वो क्या कर सकते हैं, ना कि अब वो क्या नहीं कर पाएंगे, या कैसे नहीं चल पाएंगे, या कैसे वो काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक्सेप्टेंस जहाँ आएगी, वहां आएगी जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि अब वो क्या क्या कर सकते हैं, और ये गाइड वही कर सकते हैं जब केयर गिवर्स इसके बारे में वो ज्यादा जान सकेंगे। इसका जानकारी हमें देने, केयर गिवर्स को ये जानकारी कैसे मिलेगी? ऑफ कोर्स डॉक्टर्स है, सारे काउंसलर्स है, उनकी बात, उनसे बातें करके उनको समझ के वही चीज वो इम्प्लीमेंट कर सके, ये हमें जानना है। बेसिकली फोकस ऑन व्हाट दे कैन रादर देन व्हाट दे कांट। नेक्स्ट। हमें पता है पेशेंट्स काफी चैलेंजेस से गुजरते हैं, बी फिजिकल और मेंटल। सिमिलरली केयर गिवर्स कौन से फिजिकल चैलेंजेस से गुजरते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। रोजाना उठना चलना नहाना खिलाना, ये सब काम फिजिकली एग्जॉस्टिंग होते हैं। अगर ठीक से उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, खा नहीं पाए, तो ये सिर्फ पेशेंट के लिए ही प्रॉब्लमैटिक नहीं बट केयर टेकर्स के लिए भी इक्वली टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है? पहली चीज, वो सारी ट्रिक्स, वो छोटी छोटी आदतें पहले समझना है पेशेंट को, और उन्हें हेल्प करना है कि कैसे उनको उठा सकते हैं ट्रिक यूज करके, या कौन सी सेफ्टी डिवाइस यूज कर सकते हैं उनको चलने में मदद करने के लिए। उनको मदद करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की मदद नहीं ले सकते। इसके लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई किया जाए, और वो ट्रिक्स कैसे आप पेशेंट को सिखाया जाए। नेक्स्ट। इमोशनल स्ट्रेस, पेशेंट के साथ रहना, हर वक्त उनकी हालत देखना, काफी ज्यादा बर्नआउट हो सकता है केयर गिवर के लिए। हर रोज पार्किंसंस के बारे में बात करते रहना, उसे सुन के उदास होना या उसके बारे में सोचकर उदास होना, काफी ज्यादा बर्डनिंग हो जाता है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि केयर टेकर के लिए भी। तो इसके लिए क्या करें? बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स। पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर को उनके लाइकिंग्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। उन्हें कौन सा गाना पसंद है, उन्हें कौन सा खाना पसंद है, उन्हें क्या करना पसंद है बाहर जाके, इस बारे में भी बात होना चाहिए, ताकि दोनों पेशेंट और केयर गिवर दोनों इक्वल एक दूसरे को वो अपॉर्चुनिटी दे, और वो रूम दे एक दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए। अक्सर केयर गिवर्स एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस करते हैं, इसलिए सेल्फ केयर जरूरी है। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। जब डिप्रेशन की हम बात करते हैं, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं, इससे बहुत सिंपल चीजें जो हम घर बैठे पेशेंट के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको भी सपोर्ट करें और खुद की भी हेल्प करें, वो है कुछ सिंपल एक्सरसाइज, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, या उनके साथ खुल के बातें करें, आपके मन में कब क्या चल रहा है या पेशेंट के मन में कब क्या चल रहा है,
वो क्यों कोई चीजों को लेके हट करते हैं या जिद करते हैं, उनके बारे में बात करके, ये सब आप जब करेंगे तो आप पेशेंट को भी उतना अच्छा जानेंगे और पेशेंट भी आपकी स्थिति उतनी ही अच्छे से समझ पाएगी. Try to carve out some personal time for your own hobby along with your patient's hobby. Next, social and financial burden. ये एक काफी अहम टॉपिक है. केयर गिवर्स के लिए अपनी काफी बार ऐसा हमें समझ में आता है कि केयर गिवर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या अपने फ्लेक्सिबल टाइम्स मैच नहीं होते, तो कभी हमें काफी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि कभी उनको हाफ डे लेना पड़ता है या आज छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग. So this also adds to their mental stress as well as the social and financial burden equally. इसमें क्या कर सकते हैं? There are always options जहाँ पे आप फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स सर्च कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेक्सिबल जॉब्स ढूंढ सकते हैं या सपोर्ट ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे इन चीजों पे बात होती हो या एटलीस्ट आपको सही दिशा दिखाई जाती हो कि कैसे मैनेज करना है आपके फाइनेंशियल बर्डन को भी और सोशल एनवायरनमेंट को भी आपके आसपास. नेक्स्ट, taking care of caregivers mental health, और again a very important topic. इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिकॉग्नाइज करना स्ट्रेस अर्ली, सेल्फ, जो सेकंड चीज मैंने बताई थी, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, एंड थर्ड सीकिंग इमोशनल सपोर्ट. केयरगिवर की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पेशेंट की है. काफी बार केयरगिवर्स थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं या डिप्रेस फील करने लगते हैं, लेकिन वो किसी से बताते नहीं है. आधी टाइम तो ऐसा होता है कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन इक्वली इसी टाइम पे इन्हें इग्नोर नहीं करना है. देयर कम्स द सेल्फ केयर. एज आई सेड, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश. दे शुड टॉक अबाउट इट. दे शुड do all the activities along with the patient, where they listen to music, their hobbies, social activities, talking to their friends. अगर पेशेंट से नहीं, फैमिली से नहीं, बट कई बार अपने दोस्तों से बात करना भी उतना ही उनको हेल्प कर सकता है. If not any of these, at least seeking a professional help from a counselor can also give aid to your problems. Next, sharing responsibility. केयर गिविंग की जो एक काम, जो केयर गिविंग का जो एक काम होता है, वो सिर्फ एक इंसान का नहीं होना चाहिए फैमिली में, बल्कि हर एक फैमिली मेंबर का होना चाहिए. रिस्पाइट केयर जिसे हम कहते हैं, यानी कि केयर लेते वक्त ब्रेक लेना. आज अगर आपने पेशेंट के लिए केयर करते वक्त खुद के लिए 2 घंटा निकालने का सोचा है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है. उस 2 घंटे को आप ये डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है जिसे वो 2 घंटा वो स्पेंड कर सके, ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको. सिमिलरली अगर आप ऐसे स्केड्यूल करो रूटीन को पूरे, कि फैमिली मेंबर्स में अगर आप ये बांट देंगे रूटीन उनका, तो हर फैमिली मेंबर के लिए भी वो उतना ही इक्वल हो जाएगा. ये समझना कि पेशेंट किस तकलीफों से गुजरता है और उसके लिए आप किस तकलीफों से गुजरते हो हैंडल करना, यानी कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, जिससे आप पे भार कम हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम फैमिली, टेकिंग हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स एंड केयर गिवर्स कैन ऑल्सो गिव यू अ बेटर फ्रेंडली एडवाइजेस. नेक्स्ट, अप्रिशिएट करना. डेफिनेटली हमें पता है कि पार्किंसंस डे है. इक्वली वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट अ डे हमारे केयर गिवर्स के लिए, उनके लिए अप्रिसिएशन डे रख सकते हैं. ज्यादा कुछ नहीं, बस उनको थैंक यू बोलना या उनके लिए एक ऐसा मैसेज उनको देना जहाँ पे आप अप्रिशिएट करो उनके काम को, जहाँ पे सुन के उनको और वो एनकरेजमेंट मिले और वो प्रोत्साहन मिले, जिसके लिए आपकी लाइफ वो और अच्छे से वो आसान कर सके. क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक केयर टेकर की सुधरेगी, तो ही वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक पेशेंट की सुधर पाएगी. इट्स लाइक अ साइकिल, एंड डेफिनेटली इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को देना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला है. नेक्स्ट, conclusion of this small topic but an important one is, talk about your problems openly. जब जब आपको लगे आपको कोई चीज बॉदर कर रही हो, तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको बात करनी है. पेशेंट से, फैमिली मेंबर से, हर किसी से, क्योंकि हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है ना छोटी बात है. इफ यू नीड हेल्प एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. And support givers means improving the lives of Parkinson's patients. So definitely you can only help them if you help yourself first. Next,
जैसे कि सर ने बताया, पीसीटी का ये फॉर्म है मेंबरशिप बनने के लिए। आज लास्ट डेट है। डेफिनेटली ये स्कैन को आप स्कैन कीजिए और मेंबर बनिए। रजिस्टर करिए इस मेंबरशिप के लिए, ताकि इसके और भी जो जानकारी है हम आपको पर्सनली दे सके इस बारे में। नेक्स्ट, द लास्ट थैंक यू। डेफिनेटली यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट इज अवेलेबल। Caring for your loved one is a major responsibility, and you have the ability to enhance this quality of life of Parkinson's if only if you enhance your quality of life first. Thank you. Thank you, Dr. Devashri. I think that was a very nice presentation, and I would like to ask people participating in the webinar to put their messages or question answers in the question answer box. Use the Q&A box, and also try to see when you log into the Q&A box, area called answered question, because I answer several questions, so your question might have already been answered बिकॉज इट वॉज आस्क्ड बाय समवन एल्स, किसी और ने पूछा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया होगा। आपने ये केयर गिवर के बारे में सुना। केयर गिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपने जीवन में, पार्किंसंस के पेशेंट के जीवन में प्ले कर रहे हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए डॉक्टर्स वी हैव रियलाइज कि हम खाली पार्किंसंस पेशेंट का भी नहीं, उनके केयर गिवर की भी सेहत का ख्याल करें। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। तो अगर पार्किंसंस के पेशेंट की, मरीज की जिंदगी अगर अच्छी बनानी है हमें, तो हमको दोनों की जिंदगी अच्छी बनानी है ताकि आगे जाके उनको फायदा मिले। जसलोक अस्पताल में काउंसलिंग भी होता है केयर गिवर का, डिस्कशन भी होता है। तो कभी भी आपको जरूरत लगे कि आपको कोई लीनिंग शोल्डर की जरूरत है जहाँ पे आप बात कर सके किसी से, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच आउट टू जसलोक हॉस्पिटल। और कैसे जसलोक हॉस्पिटल पहुंचेंगे? तो आपका सबसे आसान रास्ता है पार्किंसन केयर ट्रस्ट का मेंबर बन जाने का। आपको ये वेबिनार के बाद पार्किंसन ट्रस्ट के मेंबरशिप का फॉर्म भी आएगा, और डिस्काउंटेड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी का भी एक फॉर्म आएगा। तो अगर आपको दोनों में से जिसकी भी जरूरत है तो आप भर सकते हैं। पार्किंसन केयर ट्रस्ट के मेंबरशिप के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको मुफ्त में काफी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग डॉक्टर रे चौधरी टू ज्वाइन। वो कभी भी अपने साथ आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं मेरा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। और जब भी वो ज्वाइन होंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने हैं वाले हैं, जो मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़े हुए ईच एंड एवरी पार्किंसन डिजीज पेशेंट विल बेनिफिट। आपको हर एक को फायदा मिलेगा, और ये लेक्चर वापस कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर है जो रेयरली ये टाइप के वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टिक टू द वेबिनार एंड जाइएगा मत, और ये कंटिन्यूअसली सुनते रहिएगा। तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन एंड प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने बताया था, आज का टॉपिक रहने वाला है हाउ कैन वी इम्प्रूव after deep brain stimulation surgery, improving outcome after deep brain stimulation surgery। आपने पहले दो लेक्चर्स में डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कभी की जाती है, उसके नए टेक्निकल एडवांसेस क्या है, ये इसके बारे में सुना। लेकिन आज के दिन में जिसने डीबीएस किया है या जो कराना चाहता है, उसका आउटकम कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये बार मैं अलग तरह से बात करूंगा आपसे, केस बता के, ताकि आपको तुरंत समझ में आए कि अरे ये तो मुझे मुझे भी यही प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो सकता है। मेरे डॉक्टर तो बोलते थे कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। जब भी हम करंट देते हैं पेशेंट को, तो एक चीज होती है जिसमें इंप्रूवमेंट आती है, और दूसरी चीज होती है जब भी करंट और तेज बढ़ाते हैं तो साइड इफेक्ट आती है। तो ये इंप्रूवमेंट और साइड इफेक्ट के बीच का जो गैप है उसको थेराप्यूटिक विंडो बोलते हैं। अगर इंप्रूवमेंट 2 मिली एम्पियर पे आ जाती है, साइड इफेक्ट 3 मिली एम्पियर में आती है, तो मैं करंट धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 मिलीमीटर जाने की गुंजाइश है। 3 मिली एम्पियर तक नहीं गया तब तक मेरे को साइड इफेक्ट नहीं आने वाली है। कभी कभी ये उल्टा हो जाता है, तो इंप्रूवमेंट आने के पहले ही साइड इफेक्ट आ जाती है, जैसे ये पेशेंट में है। तो क्या किया जाए?
करंट बढ़ा ही नहीं सकते, जैसे करंट बढ़ाते तो साइड इफेक्ट आती है। तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो ये पेशेंट को पार्किंसन डिजीज था, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की थी हमने। सर्जरी के बाद काफी अच्छा कर रहे थे, बट हमारे पास जब भी वापस फॉलोअप में आते हैं, ये प्रॉब्लम्स पार्किंसंस के बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे। ऐसे उसको स्लरिंग ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम था, और ये इनकी स्पीच थी। Now, this is the recording of initial setting with pulse width 60. It is widely recognized that mathematics, music, and philosophy have inseparable links. Around the words like butter, integrated मुश्किल है कुछ समझने का। and their mind. तो आपने सुना कि ये बोलते हैं, लेकिन बोल अपने को सुनने में क्लियर नहीं आती है बात। अभी ये हमने क्या किया कि इनकी जो पल्स विथ थी इधर 60 पल्स विथ और 60 पल्स विथ, हमने वो ड्रॉप किया कर दी और 40 कर दी पल्स विथ। तो हमारा थेरापेटिक विंडो इंप्रूव हो चुका। In this setting, we have reduced the pulse width from 60 to 40 and we have increased the frequency from 110 to 130 hertz. Now we In this setting, we have reduced the pulse width from 60 to 40 and we have increased the frequency from 110 to 130 hertz. Now we will see the changes in the speech. It is widely recognized that mathematics, music, and philosophy have inseparable links. Renowned philosophers like Bertrand Russell integrated their knowledge of philosophy with their analytical mind. Due to their deep grounding in scientific thinking and wrote exclusively to So you could see that it was much more clearer than before. And this was found by Professor Jens Bachmann from Germany, कि pulse duration settings of subthalamic nucleus can influence the outcome and side effects of patients of Parkinson's disease. कई कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों ने बाहर डीबीएस करवाया है। जसलोक में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी नहीं हुई है, कहीं और पे हुई है। और ये पेशेंट था हमारे पास, कलकत्ता से आया था, उनका नाम से ही पता चल सकता है, कलकत्ता से आया था। उन्होंने इंडिया में कोई और जगह पे डीबीएस कराया था, बट उनको फायदा नहीं मिला था। तो वो हमको ढूंढते ढूंढते आ गया। जब भी सर्जरी के बाद इनकी तकलीफें कम नहीं हुई, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, स्लोनेस, स्पीच डिफिकल्टी, और डेली एक्टिविटीज करने के लिए काबिल नहीं रहे और साइड इफेक्ट्स होने लगी, तभी वो ढूंढते ढूंढते जसलोक अस्पताल आए। तो ये उनके प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स थे। हम आपको इसकी डिटेल्स में बोर नहीं करेंगे। और ये इनकी वीडियो थी। आगे फॉरवर्ड आप करके उठिए। हाँ, बैठिए। काफी स्लो थे, खड़े होने में दिक्कत थी, बैलेंस नहीं रहता था। चलने में दिक्कत है। जब भी हमने प्रोग्रामिंग किया उनको, तो अच्छा तो हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो गया, जैसे आप देखोगे इस वीडियो में। Now, इसको साइड इफेक्ट बोलते हैं डिस्काइनेसिया। on medication and on stimulation will increased current. He is having dyskinesia. Dyskinesia. सो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन डिस्काइनेसिया की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो हमने क्या किया, Now is on medication, on stimulation, but the stimulation current has been reduced by 5 parts, and there is will look for dystonia whether it is coming or not. Dyskinesia will look for dyskinesia. Yeah. To तो control अभी that, डिस्काइनेसिया नहीं आता। reduce the now there is no dyskinesia. कैसा लग रहा है आपको अभी? नहीं, अभी डिस्काइनेसिया नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है? स्पीच अच्छा हो गया वगैरह। कभी कभी पार्किंसंस के मरीज का डीबीएस के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता है, साइड इफेक्ट्स या
एडवांसिंग स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज होता है और नई नई दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। फॉर ये एग्जांपल, ये पेशेंट था हमारा जिसको चलने में दिक्कत आना चालू हुई, फ्रीजिंग ऑफ गेट। नीचे उतरिए। कुछ वजह से ये वीडियो दिखती नहीं है समाव, बट उनको चलने में बहुत दिक्कत थी और देखते ही ये वीडियो प्ले होती है अच्छे से। नहीं, इसमें भी दिक्कत आ रही है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस वीडियो फॉर यू। Looks like Professor Chaudhary has joined. Welcome, Dr. Ray Chaudhary, to our webinar, and we are very pleased that you have accepted our invitation. As I told you, Professor Ray Chaudhary is one of the most renowned neurologists and movement disorder specialists in the field of Parkinson disease. I myself have a great respect for him because he has showed us how we can sub-classify the Parkinson disease and how we can help to improve the quality of life if we are more attentive to the symptoms. And आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज ऑन द नॉन मोटर सिम्टम्स, जो हम सब पार्किंसंस पेशेंट्स के मरीजों के लिए एक नाइटमेयर रहती है। तो प्रोफेसर रे चौधरी, इट इज यू आर वेलकम टू द वेबिनार एंड आई वांटेड टू नो इफ यू वुड हैव टाइम for me to finish the presentation, or you would like to do your presentation and I can continue later. If you have to go for your work, I can take the presentation in between. If that's okay, Yeah. Paresh, that'd be Yeah, that really is fine. useful. I'm No, so no, sorry. thanks I've very got quite a lot of engagements today, and I'm No, trying to no, we get really that in. appreciate. We really appreciate. No, it's no problem. I've just started the presentation just to keep the audience engaged. So we will stop sharing the screen. And Asmita, if you can once again introduce Professor Chaudhary, and then we start the webinar. Do you want me to share this talk Yeah, now, yeah. or In a minute, let Asmita introduce you formally. okay? Asmita, can you show the slide for Professor Chaudhary? Uh, or, yeah. Please introduce. So Dr. Ray Chaudhary is a professor of neurology and movement disorder at King's College Hospital, London. He is the director of the Parkinson Foundation International Center of Excellence at King's College. He is also chairman of the Industry Engagement Committee and the co-chair of the task force of the Parkinson Wellness Committee of the Movement Disorder Society. He has published over 350 peer-reviewed papers. He is a researcher director and assistant medical director at King's College Hospital. He has published largest number of articles in this field. He has been considered as one of the top researchers in England and has been awarded prestigious UK NHS Gold Merit Award in 2021. Thank you. Over to you, Dr. Yeah. Thank you so much. Yeah, if you can start sharing, yeah. I don't know whether you can see the screen. Yeah, we can see it clearly. Yeah. Thank you. So thank you first to Professor Doshi for his kind invitation. And it's a delight and a pleasure always, of course, to speak in audience in India. I come from Kolkata myself and came to England as a foreigner, still as a foreigner, but sort of live here in a way. And I've dedicated my entire working life to looking at the non-movement problems of Parkinson. So I'd like to talk to you a little bit about that, and particularly its relevance to clinicians. I like research to be practical, not just rocket science, if you will. So this is sort of work that we've done here in combination, many colleagues, many in India actually, and a delight and pleasure to be here. I want to talk to you about a group that is led by this group called the Movers and Shakers. They're very famous. They're all got Parkinson's, group you see there. And two of them are my patients.
And they have regular podcasts. You can hear these podcasts. They're incredibly they're global, and they're called Movers and Shakers podcasts. They come up every 1 or 2 months. They talk about different aspects of Parkinson. And one of the things they recently talked about was that amongst neurologists, there is little awareness of the non-motor issues of Parkinson. You can see that there are problems with pain, fatigue, sleep, apathy, dribbling of saliva, bladder problems, bowel problems, such defining issues. Yet we always talk about tremor and bradykinesia and rigidity. Falls, how cue walking can help with balance, etc. No information on diet. Often we don't give diet as such an important role in Parkinson. Exercise, timing of food and levodopa. If you take milk after levodopa, your levodopa doesn't get absorbed, etc., etc. So this talk will focus a little bit on those practical issues in relation to Parkinson. Now, Paresh mentioned the subtypes. We have been working on subtypes. It's a very recent paper out this year, just a few weeks back, with my colleagues in Singapore, where we have tried to define the different subtypes clinically. When you have a patient with Parkinson, you should subtype them. Just like you subtype MS. You just don't say MS, do you? You say relapsing remitting disease. You say primary progressive Parkinson, MS. You say secondary progressive, etc., etc. So Parkinson can be subtyped now clinically into two specific types: tremor dominant, a lot of tremor right from the beginning. These patients often have hyposmia. They have serum uric acid might go up in those patients. And the other one is PIGD, where we have mainly postural dysfunction, a lot of balance issues. These patients have early cholinergic problems. They have a lot of non-motor symptoms. In them, you can have increase in plasma neurofilament levels. If you can measure that, you can do that. And these patients have a lot of non-dopaminergic deficit. So the non-motor subtypes, which I'll talk about after this, falls mainly also into the PIGD motor phenotype. So there is an overlap between the two. And this is where we come in. So what are the non-motor phenotypes and how are they characterized in clinic? Essentially three. One is the cholinergic dysfunction, where you have mainly problems with memory, mood, apathy, etc. Second is the noradrenergic dysfunction. These patients have sleep problems, they have dysautonomia, and they have problems with gut, a lot of problems with gut, and also pain. And the third one is serotonergic dysfunction, mainly with sleep, mood disorders, and a lot of fatigue. So these are the three main criteria of along with this comes the gait problems, apathy, and pain. And this, once you recognize this, then you can do personalized medicine. And we wrote about that a few years back in this viewpoint paper in Movement Disorders, that if you get a cholinergic subtype, you should treat it in a specific way, noradrenergic subtype in a specific way, serotonergic subtype in a specific way. But first, you got to be able to A, know about these, and B, make this distinction in the clinic. How do you do that? Well, let's go back a little bit on the history. This is taken from the PRD paper, just as I showed you. These are the broad subtypes clinically you can get. Some will present more with cognitive issues, some with apathy, some with pain, some with sleep problem, some with fatigue, some with dysautonomia. Mainly 7 clinical manifestations. They have different neurotransmitter involvement, some cholinergic, some serotonergic, some noradrenergic, and they have a different symptoms complex. Increasingly, with the more recent research, we'll go into their blood-based biomarkers, their imaging. That'll come later. It's still work that needs to be done. So cholinergic dysfunction, let's just talk a little bit about it. Many, many papers on it in the last 2 or 3 years. These gives you an overall vignette of what this might be, but what is it like clinically? Well, clinically, you have to do two tests. One, ask the patient to copy a pentagon in the clinic. And you see it here in this video, a patient who's copying a pentagon normally. So intersecting pentagon, I've asked the patient to copy, and the patient did it without any problem there. Okay. Here you have a patient who can't do it properly. So this is a cholinergic phenotype.
Sorry. You see the same, another patient struggling to do the same test. Just by doing this test, and Just try it, sir. Is it confusing for you, sir? Yeah. so you see how the patient is struggling, right? So just by doing this test, and here is what he drew. You can't, this is another patient, can't draw it properly. Just by doing that test and by asking to name animals in 90 seconds, you can identify this cholinergic deficit. If they can't do both, almost certainly they've got the cholinergic subtype. We now know from a previous study, the Cambridge campaign cohort study, that 46%, here you see the graph here to your left up, of these patients will go on to rapid dementia unless you do something about it. Not everybody with Parkinson, only this subtype. And this can be done in your clinic without any sophisticated tests. What other things would you look out for in these patients? Well, if you did EEG, this has come from movement disorders this month. If you did an EEG, these patients will often have a distinct alpha band connectivity. If you look at the functional connectivity, and these patients looked at that, and that's typical of cholinergic involvement. Typical of cholinergic. So EEG might have a role in defining this particular group of patients. And then here's the practical example. I saw a patient who had a worsening memory. Neurologists started treatment for dementia by giving donepezil, then rivastigmine, but patient did not use the dashboard. I will talk about the dashboard at the end. One of the key things in the dashboard is ask the patient to copy the pentagon. This patient tried to copy this intersecting pentagon here, came up with this, clearly problems here. Then you look at what anticholinergic drugs this patient is taking. Here's a list that you can find anywhere. Particularly be careful of using any red colored, red listed anticholinergic drug, which is 3 points. If you use red listed anticholinergic drugs in a cholinergic PD, their memory will get worse. So for instance, this patient was on amitriptyline. You see, amitriptyline is number 1 in that list. Amitriptyline, atropine, benzotropine, hyoscine, imipramine. These are the top ones. They should not be used in these patients. As soon as we stopped the amitriptyline, the patient improved. So they don't need rivastigmine, they don't need donepezil, they've not got dementia. It's the use of anticholinergics in the cholinergic subtype that can make the memory worse. Hence, it's important to recognize in clinic. Of course, they have other associations as well. These patients often have a gait problem. The following clip shows the profile of a lady who is You can see her gait problem. They freeze when turning. So it's unrelated freezing. The upper body is okay. Only the lower body, often associated with vascular disease, sometimes with normal pressure hydrocephalus, but this is very typical of this variant. Also, they have apraxia of gait, sometimes similar again to normal pressure hydrocephalus. So MRI scan of the brain is very important in these patients to rule out coexistent NPH. I think that's the important thing in these patients. Okay. So what are the other issues with this? Here is another nice paper. This is an American map, as you will recognize. The red areas are the states where they had maximum prescribing of anticholinergic drugs, and they had the highest rates of dementia. So what it's telling generically, that if you use 0.3 anticholinergics, and I know a lot of us do, in this particular subtype, you have to be really careful because you can aggravate their memory, hypotency, their memory issues. So that's the take-home message from this subtype. Now, Anna Sauerbier is one of my fellows who's now working in Germany, in Cologne. This is the first paper on non-motor subtypes that we describe, first ever, 2015 paper. We said that Parkinson, therefore, can have 3 routes of origin: through brainstem, to the limbic system, to the cognitive. Some will have, as I showed you then, sleep. Some will have autonomic, mainly the brainstem one. Some will have fatigue and pain.
and some will have cognitive and apathy. So, and then there's subtypes with depression and anxiety. So when all of this happens, you have to then identify these groups. I've already told you about the cognitive group. Let's talk a little bit about the apathy. Apathy is very interesting. In the clinic, it means the patient is unable to focus, unable to engage, and it can be cholinergic, it can be dopaminergic. And that's the really important thing, that these things can overlap. This is a review that we did about fatigue and apathy. So orbitofrontal cortex and the mesocortical mesolimbic pathways are involved. Three questions. Is there reduced motivation? Is there reduced interest? Is there reduction experiencing emotions? And you can have dopaminergic, non-dopaminergic, often with depression, often with somnolence. So what treatment can you use for apathy? Dopamine agonists might be very useful, particularly rotigotine patch or cholinesterase inhibitors, depending on if it's dopaminergic or with the cholinergic subgroup that I've described. And this is taken from our review. You see a whole range of medication, but broadly, you must remember that dopamine agonists have been tried. Pramipexole is pretty good. And some people have come out with TMS, transcranial magnetic stimulation. Repetitive TMS might also be good for apathy in PD, but further work needs to be done. But this is important to recognize in the context of Parkinson. In addition, there are many non-medical therapies that are now becoming useful. Physical exercise, social interaction, emotion-oriented care, live interactive music, and multisensory stimulation. All of them have been shown to be very effective for apathy, for depression, for low mood, and for anxiety problems in Parkinson. So if you're running a clinic, it's useful to have some of these supportive connections so that the patients can be advised this. It's not always just about giving medications. Let's now look at sleep. Sleep is a very important point in Parkinson. We know from neuropathological and neuroimaging work that this is related to serotonin dysfunction, largely. And there's lots of work with that. This is a very recent review that we published last year with my colleagues in Romania on the different management profile. Broadly, and I'm sorry for this busy slide, on one side you have excessive daytime sleepiness, then you have insomnia, then you have restless leg syndrome, then you have REM behavior disorder, and then you have early morning akinesia. These are the broad categories of sleep dysfunction in Parkinson. You need to identify them by doing a sleep scale, PDSS, for instance, an Epworth scale, and then go with specific management options for the different. Unless you identify them, you'll put one group treatment, which clearly won't work, because the way you treat excessive daytime sleepiness is very different to the way you treat insomnia, for instance. But here, with the sleep subtype, you have to remember that 10 to 15% of your patients will carry this subtype, which is the narcoleptic subtype. These patients fall asleep suddenly. 3 patients are shown here who've fallen asleep while eating, while drinking. One has even fallen and cut open his head. Narcoleptic subtype is associated with so-called sudden onset of sleep. Very simple to recognize. You must get them to do an Epworth Sleepiness Scale, ESS. Total score is 24, takes 1 minute to do. If they score over 12, think about the sleep subtype and make sure you rule out sleep apnea. In these patients, like in the cholinergic group, you don't use anticholinergic with a score over 3. In these patients, you should never use dopamine D3 agonists. That's the important thing, because you will trigger a sleep attack. So here's a list of what you should do. This is already also published by us. Avoid dopamine D3 activation. The main 2 drugs for that are pramipexole and ropinirole. Use alerting agents, modafinil or caffeine. These patients must not be driving. They also should be allowed not to swim alone. Some people are looking at trials of A2A antagonist in these patients because it increases alertness, istradefinin. You must screen for sleep apnea, and if they're on sedatives or other somnogenic drugs, you should think about whether these can be stopped.
And in many patients with advanced disease, these patients are suitable for either deep brain stimulation or subcutaneous levodopa therapy, because then you avoid using all these other non-levodopa options. Fatigue often coexists with sleep, which is a sense of exhaustion, which doesn't get better after you've had a sleep. That's the way to identify it. Fatigue can coexist with sleep dysfunction. How you treat fatigue is very difficult to know, but we now know levodopa in high doses can have a good effect on fatigue. So when you have a patient with severe sleep dysfunction, severe sleep problems, you may even consider the use of levodopa intrajejunal infusion or phospholevodopa, subcutaneous levodopa, which has been available, and also use drugs such as modafinil. There is also growing literature from Haider Dafsari and others' work that ST and DBS might be a very good treatment also for the fatigue aspect of PD, and even acupuncture. Along with that, physical exercise. So we must think about all of these when the fatigue aspect comes to the clinical fore. There are some clear evidence of how this can occur. This is data from the opicapone OASIS study, and you see that just adding a COMT inhibitor, increasing your levodopa, improves your sleep disturbance, which includes sleep and fatigue in the PDSS scale. So this is taken from a small study, but by adding opicapone, the new third generation COMT inhibitor, to levodopa, it's increasing your levodopa. If you want to do it more better, you can use phospholevodopa, phoscarbidopa. There is a patient who's off here, you can see, with severe tremor, severe apathy, and severe fatigue. And the patient is going to go on levodopa therapy. And you go, this is the same patient after phospholevodopa, phoscarbidopa, infusion subcutaneously, levodopa, nothing else. You can see the facial expression, fatigue is improved, apathy is improved, the patient's on a little bit dyskinetic, fantastic effect on fatigue, just by giving high dose levodopa, high dose levodopa. That's the message. So it's also worth noting that if you don't take care of fatigue and sleepiness, this is a very recent paper again from us, which came out literally last month, fatigue has an effect on the caregivers. So patients, your Parkinson patient who have a lot of fatigue will also experience severe worsening of caregiver burden. So you can see the effect on duration. So the higher the fatigue score of the patient, higher the duration of the disease, more anxiety, depression in the patient, worse the caregiver state. So you also have to think about that aspect and how important it is not to ignore sleep problems, not to ignore fatigue in Parkinson, which is seen in the serotonergic dysfunction. Now, another part of this Parkinson is the non-motor fluctuation. Again, a very recent paper published this year from us looking at non-motor fluctuation. This is published in JMD, Journal of Movement Disorders. You can look it up. Here you see a patient, and I'll show you them individually. Still. The body's twisted and you're getting pain, is it? Yes, I will find them back. Down here. So this patient is very, very anxious and in pain, and that's when she's off. As soon as we give her a treatment to get rid of her off period, pain disappears, anxiety disappears. Next patient is off, Mr. different Lampard, type of off. you would say you're in off period at the moment, Yes. are you? Yes, I am. And can you just describe the symptoms with the off period? I have a feeling of tightness around my head. Yes. And all the scalp muscles contracting at one time. Yep. And it feels like a big weight on top of my head. Okay. And my neck is very stiff. Okay. So this patient, you can see, is as tightening, tingling, numbness, headache. Different aspect of non-motor fluctuation. Third patient, mainly very anxious when off. Like that. Oops, sorry. The shoulder. This is Javed off. Would you do this movement part? So you can see the dystonia during off and the anxiety.
So these are all manifestations. The non-motor fluctuation, often we don't recognize it. They're more troublesome sometimes to the patient than the motor fluctuation, and that's discussed in this review. We have reviewed all the current literature that there is. How do you treat this? Well, the management can be done by really non-continuous drug delivery. Retigatin patch, if you have that, is very good. Sulfinamide and opicapone are very good, as I showed you, because opicapone will lengthen the levodopa. If you want to go into advanced therapies, subcutaneous apomorphine, intrajejunal levodopa, subcutaneous phospholevodopa, as well as DBS. All of this have got data on 36 months data with DBS published in JNNP last year, again from our collaboration, showing that they are very good in managing non-motor fluctuations. So you should bring that in to your pathway of care when you're looking at advanced therapies, for instance, non-motor fluctuations, and you can measure them very easily by very different simple use of scales. Not even scales, by interview you can do it. So it's something that you need to remember about non-motor. Here's an example how this can affect this patient, young onset Parkinson. See her left-sided dystonia, tremor, and she's in horrendous pain, awful pain. That's what's really bothering her most, along with the off period. And see the same lady after injection of apomorphine. Dramatic reversal within a period of 15 minutes or 10 minutes. So dopaminergic non-motor fluctuation is very important to recognize. It can occur in any of the subtypes, but some patients are more prone to it than others. We don't know why. And remember, using parenteral or non-oral therapies might be very, very effective in these patients. How about the other therapies? Well, very recently, and this is paper come out last week, the Elegance paper, which is levodopa, carbidopa, and tacopone combination called Lesijone, which we can give like duodopa into the jejunum. That appears to have a good effect on sleep and also on fatigue. Here you see the scores, PDSS-2, motor symptoms at night, PD symptoms at night, disturbed sleep, all of it highly significant improvement at 6 months and at 1 year. So that's very, very good to know. This therapy, if it's available in future, would be a very good thing. Also, we published very recently that if you use phospholevodopa, phoscarbidopa, this paper came out last year, then you have, the more you improve their sleep by using 24-hour therapies, which at this moment, you can only do with DBS, or you can only do with phospholevodopa and phoscarbidopa, 24-hour treatment. You improve their off time, you improve their quality of life, you improve the activities of daily living. So off time, PDQ-39 is quality of life, and MDS-UPDR is part 2, which is activities of daily living. So just by improving sleep into that serotonergic group, you're also improving many of the other parameters of these patients. And interestingly, we've also recently published this work on looking at phospholevodopa, phoscarbidopa. Another area where this is particularly useful is early morning off period. And you can see that in the lower graph, how this 77.7% of these patients were waking up in the morning absolutely stiff, unable to move, around 3, 4, 5 in the morning. When you start them on a 24-hour infusion, like you can do with levodopa now, you have a dramatic drop in the first week at 31%. This is 77.7 to 31, which then is persistent at week 52 at 27.8. So it's a dramatic improvement in their sleep, as you can see, with just using this therapy. So one of the things to think about, particularly when you have this early morning off period, is to think about therapy that goes all through the night. And very recently, this is paper currently in review about nocturia. Many patients with Parkinson's get up at night several times to pass urine. If you're sleeping and if you have to get up 5, 6 times at night, you're not going to sleep very well. You'll have fragmented sleep. And both in randomized trial, which is the graph A, and open label trial, graph B, you see a significant reduction in nocturia if you use DOPA through the night. And I think similar data is also available with DBS in the EuroInf study. This needs to be written up together that at the moment, the only 2 treatments that can really work for nocturia
are overnight infusions, which can be given by foscarbidopa or apomorphine or DBS. So these are the two things to think about and how difficult it is for patients to have. What about impulse control disorder? Again, a very recent paper just out again. So this year has been quite productive for us. You can see that we have written what is new, where we are with impulse control disorder, because that's a part of this phenotype, isn't it? Particularly some phenotypes will go in the dopaminergic one, will use a lot of this different types of treatment. What we have tried to do here is to make sure you make a distinction between impulse control behavior versus impulse control disorder. Two are not the same. And if you look at active management, if you rate your patient to have a slight with no functional impact, the patient just feels probably a bit more overstimulated, wants to buy a few things more, probably engages in social life more. That doesn't need stopping their drugs. It just needs monitoring. Whereas, of course, if you got mild to severe grade, then you have to reduce the agonist, sometimes stop it. And if the patient still continue to have it, your options there are really DBS or levodopa infusion therapy and stop all the oral therapies. Yep. So that's really where we are in terms of the development in the impulse control related behavior disorder. I put down here a list of the different drugs. You can see that there's an exponential increase in drugs used for Parkinson. The reason why I put that up is that we must remember that there are other things than drugs. One of the great things that has happened with Parkinson is the understanding that non-drug therapies are probably as important. And this is a very recent trial, SIMPD, developed by Valentina, who's my fellow, now working in Milan, with the Swedish group. And this is a randomized, multi-center, placebo-controlled study, which shows just by using a probiotic, that's called Simprove. Why Simprove? Because Simprove gets into your large bowel. Other probiotics don't. Just by using this once a day, it's not a drug, you increase your time to on after levodopa significantly. You can see that 0.027 is the impact, is the p-value. The non-motor symptom scale also improves very significantly, and that is driven by reduction in anxiety, reduction in mood, improvement in sleep, and also, if you measure inflammatory biomarkers in the plasma, you see an improvement in TNF alpha levels and also interleukin 6 levels. So, just by improving your microbiota, because you all know about the gut brain hypotheses, just by improving the gut microbiota, you're actually bringing together motor improvement and also reducing inflammation in the plasma. So that's a really, and Simprove is dead easy to use. It's available in the internet. Anybody can have it. Similarly, there is also some recent study saying exercise can have a dramatic effect on our patients, and I now prescribe exercise for all our patients. Physical exercise of 150 minutes a week is very, very important. And that then takes us to my last slide. So non-motor symptoms, that's the whole idea. We are soon to launch a journal specifically on non-motor aspects. At the moment, we're running 2 supplements. So please feel free through Paresh to submit anything to us. We'll fast track. What is new is that I've told you about the subtypes. I've told you about some of the subtype specific treatment, and we didn't have time to talk about the validated outcome measures. But blood-based biomarkers, genetics, early onset Parkinson, these are all very, very important aspects, non-motor fluctuation in relation to the non-motor aspects of Parkinson. So that's really, really very important to recognize. And this finally is this. These are the basic stipulation in the dashboard, which we believe every Parkinson patient should receive. Firstly, avoid dairy after levodopa intake for 40 minutes. If you have dairy, any milk product after they're taking levodopa, it's going to slow down the absorption of levodopa dramatically. Second, 150 minutes of physical exercise every week. And I call them exercise snacks as well. You can have small bits of exercise during the day.
as long as it adds up to 150 minutes. It doesn't mean that everybody has to dress in a leotard and go to the gym. Whatever helps you. Just walking up and down, go upstairs, downstairs, play around a bit in your garden, whatever. 7 to 8 hours of sleep a day, crucially important because it activates your lymphatics, reduces amyloid deposition. Sleep snacks, short naps during the day, useful. 2 liters of water a day, avoids dehydration. And finally, using of the Simproof probiotic, as I've shown you, is also very, very important. And then bone check, worth remembering that 2 in 4 women, 1 in 5 men over the age of 50 will have osteoporosis. So make sure they're on vitamin D and vitamin C, anticholinergic awareness, not to give grade 3 anticholinergics in those with the cholinergic subtypes, and those with Epworth score of 12 should not be driving, basically. That's the most important thing. So I think I'd like to end there. We're trying to raise money for our charity to develop this dashboard, which I want to be used globally, India being a major partner of it. And I hope this will be supported by people. We're being very actively supported by Patient Voice. And I thank you again, Paresh, for inviting me. And I'd like to stop there. Thank you very much. Thank you very much, Professor Chaudhary. And it was a really enlightening lecture. I'm sure there are a lot of people who have heard it, but we would be translating if you would permit it in Hindi and for the patient, if we have your permission. Yeah, sure, no problem at Thank all. you. So, because we will be putting in the YouTube so that a lot of people cannot understand at one given time and they might want to go back and look at it. फॉर द ऑडियंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। पार्किंसंस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ट्रेमर स्लोनेस लोग भूल जाते हैं। जो डॉक्टर चौधरी ने आज बात की वो बात सबको तकलीफ में लाती है। नींद नहीं आता, थकान लगनी एंड मैनी मैनी थिंग्स। तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि यू शुड गो बैक एंड लिसन टू दिस लेक्चर एट लीजर at your more comfortable time. It would be available on YouTube and through the channels that you are participating so that you can review it. I have 2 or 3 questions for you, Professor Chaudhary. One is that in the list, if I may missed anticholinergic में trihexyphenidyl जो Pacitan है, is this also a part of that or that is not considered to be as damaging? Which one again, Paresh? Sorry, I missed that. Trihexyphenidyl. Oh, trihexyphenidyl. Yeah, it's in the grade 2. Again, Great. I would be very careful about using that in that group. It's just that group. You just got to be careful. If they can't copy the pentagon properly or Correct. have real problem with naming animals in 20 seconds or 90 seconds, then I think I would preferably not use anticholinergics in that group. Absolutely. So, because that is very commonly used in India, that is why I brought it up. Pacitan करके गोली है और संभाल के खानी चाहिए, especially few people. Second thing I wanted to tell Ray, very interesting observation. We conducted a randomized control study of almost 12 to 15 parameters, which included also caretaker burden and lot of questionnaires about Parkinson disease, of using dance plus meditation and music plus meditation. So this was a very structured study where we offered an option to the patient because we realized that a person who doesn't like dancing, and if I force him to do as a therapy, it is not going to go a long way. And if someone likes to do music, we gave them an option of music, and we could find in this randomized control study that we were able to slow down the progress of the disease as compared to the controls. So, but we had also included meditation of 15 minutes and it was 1 hour supervised session. So it is not something that is done without supervision. So supervised session 3 times a week. So 180 minutes, something nearer to the time that you recommended. But we found a very strong positive correlation. It's a very, very interesting. I think, we need to become more aware of the real importance of these, collateral developments. Exactly. But all those vitals I mentioned, they're probably as important as just giving levodopa drugs. Absolutely. And the last question I wanted to know was about probiotic. So
like you differentiate different types of non-motor diseases. So same Correct. for the probiotic advocacy, do you differentiate between the gut first Parkinson disease versus brain first Parkinson disease, or it can be given to every patient I without? think that's a really, really good question, Paresh. I think the gut first is the one that probiotics are probably more relevant. Correct. But having said that, there is also increasing, and this has not been properly looked at, is in the cholinergic subtype, is there also a gut dysfunction? The inflammation is a key cause of cognitive issue. So Yeah. it won't do you any harm to use that. Great. So I think that was a fantastic, enlightening talk, and we will refer it to it. And you are most welcome to stay back. For the audience, मैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बाद जो फायदे होते हैं और कैसे वो फायदा कैप्चर किया जा सकता है बाय वेरियस टेक्निक्स, उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में बताऊंगा. बट I'll प्रोफेसर, log out, but then I'll log in again. प्लीज, थैंक यू. Thank you, Paresh. Thank you for Thanks a lot. joining us. Okay. Thank you. Okay. Bye. So, yeah, goodbye. So I start with sharing the screen and we continue with our presentation. ये पोस्ट डीबीएस मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं वो मैं बताना चाहता था आपको. ये देखिए, जो जो मैं बता रहा था कि 3 या 4 साल के बाद तकलीफें चालू होती है, जो डॉक्टर चौधरी ने भी बताई. एंड लुक एट दिस पेशेंट आफ्टर सर्जरी. अभी सर्जरी हो चुकी है, अच्छा था, थोड़े सालों के बाद खराब हो गया, क्योंकि डिजीज तो आगे बढ़ता ही है. नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, उठाइए पैर. देखो अभी जरा भी चल नहीं पाते हैं. तुम वीडियो देखो, हम देख रहे हैं, बहुत जरूरी है वीडियो. हाँ, उठाओ, डॉक्टर को इस पर डिसीजन लेना है. हाँ, उठाइए, उठाइए पैर, उठाइए पैर, उठाइए, उठाइए पैर, पैर उठाइए, पैर उठाइए. और इसको हमने नए तरीके से स्टिमुलेशन का टेक्निक यूज किया, जिसको बोलते हैं ड्यूअल स्टिमुलेशन. इसको पहले सबस्टेंशिया नाइग्रा को स्टिमुलेट, सबथैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते थे. अभी सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा दो चीज को स्टिमुलेट किया. तो अभी देखो कितना फर्क हो गया है. तो जैसे मैं बता रहा हूं कि ये स्किल खाली सर्जरी में नहीं है, सर्जरी के बाद इसको कैसे प्रोग्राम किया जाए और कैसे कैसे टेक्निक्स यूज की जाए जिससे आपको और फायदा मिल सके जब भी आपकी तकलीफें बढ़ती है. रिसेंटली वी कंडक्टेड इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टडी, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कैसे किया जा सके. क्योंकि हमारा सेंटर तो बहुत एडवांस है, तो हमारे पास बहुत सारा तजुर्बा है, लेकिन जो सेंटर नए हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये नया स्टडी किया, जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को स्टैंडर्ड मेथड से और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड से कंपेयर किया गया. तो हमको पता चला कि स्टैंडर्ड मेथड और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड दोनों कंपेरेबल थे. दोनों में एवरेज प्रोग्रामिंग टाइम 14 मिनट में हम प्रोग्राम कर पाए थे, और 70% पेशेंट्स ने ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने का एक्सेप्ट किया. एंड ये जब भी हमने कहाँ पे ये करंट जाता है, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग से ब्रेन के अंदर कहाँ करंट है वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ पे करंट जाता है, वो कंपेयर किया, तो दोनों एक ही जगह पे था. इसीलिए तो दोनों को सिस्टम में फायदा था. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, एंड इट showed a lot of benefits for automated programming for DBS. ये दूसरा प्रकार का इल्यूमिना 3D स्टडी है. अभी ये इल्यूमिना करके जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका में उपलब्ध होना चालू हो गई है, और सारी चीजें अभी इंडिया में भी वापस आ जाएगी. बट ये स्टडी में भी एक दूसरे प्रकार से ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग किया गया था, और उसमें भी पता चला कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, हम सादा प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस प्रकार से 2 कांटेक्ट पॉइंट मैक्सिमम स्टिमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वही तो ह्यूमन माइंड सोच सकता है. लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में देखो, आप चारों चार कांटेक्ट पॉइंट यूज किए हैं, और अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से टेलर मेड प्रोग्राम पेशेंट को दिया गया. तो उसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कम और इंप्रूवमेंट ज्यादा मिल सकती है. कभी कभी तकलीफें बहुत बढ़ जाती है. तो सालों पहले जब डीबीएस अवेलेबल नहीं था, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तभी मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास एक रोड ब्लॉक आ जाता था. वी वर हिटिंग अगेंस्ट द वॉल. तो क्या करते थे, तो डॉक्टर आपको अस्पताल में एडमिट करके सब दवाइयां बंद कर देते थे.
और फिर वापस चालू करते थे इन द होप दैट इट विल सेट द बॉडी अगेन। तो सिमिलर थिंग इज ए क्रोनो रीसेट। ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा रिसर्च इसके ऊपर चालू है, जहाँ पे डिसिंक्रोनाइजेशन किया जाता है और दिमाग के कोष को कंप्लीट डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं, ताकि डीबीएस का इंप्रूवमेंट जो है वो वापस कैप्चर किया जा सके। रिमोट प्रोग्रामिंग भी अभी आ गया है इंडिया में, खाली एक आध कंपनी अवेलेबल है, बट यूजुअली थोड़े टाइम में ये भी रिमोट प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो आप अहमदाबाद है, कहीं और हैदराबाद है या बेंगलोर है, तो मैं मेरी ऑफिस में बैठ के आपको प्रोग्राम कर पाऊंगा। और लास्ट ये इसके बारे में बात करूंगा, ये जो नया सिस्टम आया है सेंसिंग और क्लोज लूप डीबीएस सिस्टम, जहां पे ब्रेन सिग्नल को सैंपल करके उसका असेसमेंट करके उसके सामने करंट, काउंटर करंट दिया जाता है, ताकि एक तरह से बोला जाए तो जितनी जरूरत है उतना ही करंट दिमाग को दिया जाएगा, नॉट कम नॉट ज्यादा। और वो कैसे हो सकेगा? क्योंकि ब्रेन के अंदर के सिग्नल पेस मेकर सेंसिंग करता है और सामने करंट डिलीवर करता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और ये इसके बारे में और इम्प्रूवमेंट आगे जाके होता जाएगा। लास्ट 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा? तो एडप्टिव डीबीएस होगा। आपके हाथ में बेल्ट होगा, आपके बेल्ट में वाइब्रेशन आएगा, करंट बढ़ जाएगा दिमाग में। आपको चलने में दिक्कत आती है, आपका पैर चिपक गया, दिमाग को सिग्नल जाता है, दिमाग करंट दे देता है। तो इस तरह से एडप्टिव डीबीएस और न और बढ़ते जाएगा। ये हमारी जसलोक की टीम है, ये क्लिनिकल टीम है, जिसके अंदर आप साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेन फिजिशियन से लेके रेडियोलॉजिस्ट सबको देख सकते हो। ये ऑपरेटिव टीम है, ये ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, करीबन 12-13 लोग रहते हैं यूजुअली। और ये है मेरी क्लिनिकल टीम जो क्लिनिक में मदद करती है। और अगर आपने जसलोक में डीबीएस करवाया है तो आप सब लोगों को पहचानते होंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड एंड टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी इन द क्वेश्चन आंसर रूम। या देयर आर कपल ऑफ देम, मैं आंसर करता हूँ। डॉक्टर चौधरी ने जो दवाइयाँ बोली है आज के दिन में अवेलेबल नहीं है। इंटेस्टिनल जेल इन्फ्यूजन ऑफ लिवोडोपा या फॉस्ट लिवोडोपा, दोनों गोलियां अवेलेबल नहीं है। प्रोबायोटिक अवेलेबल है। या और someone has thanked Dr. Chaudhary, which is good. And I think with that, can you flash the slide for the DBS and PCT both? वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि आज ये 6ला वेबिनार है। आप पार्किंसन केयर ट्रस्ट के मेंबर बन जाइए, तो आपको ये वेबिनार्स वापस सुनने को मिलेंगे। वो जरूरी है क्योंकि काफी सारी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है लेटेस्ट, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आप करो। आई हैव रेज्ड हैंड फ्रॉम समवन कॉल शैलेश, क्या कहना चाहते हैं? सो आई डोंट नो, बट इट विल बी स्टॉप। या we have some another person also raising hand. uh, you can type it in your question answer and I will be able to answer, because we will not be opening it the mic for people. Dr. DBS surgery is effective for PSP patient. If the PSP patient is able to walk, then the DBS surgery can benefit. My father has Medtronic DBS. What next on that? If your father is doing well, Shailesh, then there is nothing more to be done. If he's not as comfortable or not doing as well, then we can he can be reprogrammed at a good center. एमआरजी एफयूएस के बारे में थोड़ा देर वेट करिए। आप मेंबर होंगे पार्किंसन केयर ट्रस्ट के, तो लेटेस्ट ब्लॉग हम तैयार कर रहे हैं। एट द मोमेंट पार्किंसन के लिए वो एडवाइजेबल नहीं है। नॉन पार्किंसन ट्रेमर है तो आपको एडवाइजेबल है, क्योंकि पार्किंसन के बारे में जैसे आपने डॉक्टर रॉय चौधरी से सुना, आगे जाके बहुत सारी तकलीफें हैं, और वो सब चीजें एमआरजी एफयूएस से कंट्रोल में नहीं आने वाली है। शैलेश, इट सेज ERI, दैट मींस इट हैज फिनिश्ड द एंड ऑफ लाइफ हो गया है। तो आप कांटेक्ट करिए। इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्सन टू कांटेक्ट, यू कैन कांटेक्ट जसलोक हॉस्पिटल, my office, and they will help you.
दीपा को जानना है कि जीनस पीसी पेसमेकर के बारे में। अगेन ये एडवांस बॉस्टन साइंटिफिक का पेसमेकर है, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी जो हमने डिस्कस की वो उसमें उपलब्ध है। कैन ड्रग्स बी स्टॉप्ड आफ्टर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी टू रिजर्व फॉर फ्यूचर? ड्रग्स टोटली तो बंद नहीं करते हम, करीबन 40-50% कम कर देते हैं, कोई कोई पेशेंट में और भी कम करते हैं। नहीं शैलेश, द मेट्रॉनिक कंपनी इज स्टिल मेकिंग द डीबीएस प्रोडक्ट्स, बट दे आर मोर एडवांस्ड। सो एज आई सेड, आप कांटेक्ट करिए ऑफिस में तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट। और क्या चाहिए आपको जानने के लिए? आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट। सो विद दैट, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेबिनार एंड वी हैड अ गुड अटेंडेंस, एंड आई thank everybody for joining and being with us. See you all. Mostly one time we will have another update of webinar in the middle of the year, around August, September. But otherwise, once again, New Year in the next year. Thank you very much. व्हाट इज द लिंक फॉर यूट्यूब? आपको पार्किंसन केयर ट्रस्ट के मेंबरशिप के द्वारा मिल जाएगी। या you can get Dr. Vinod Shah. You have been given an appointment. You can join us in Tuesday. Okay. I think we have answered all the questions. Goodbye.